इसके अंदर पिछली तारीख से लेके आज तारीख तक एक चीज डेवलपमेंट है, which is my duty to point out. Your Honor will recall, मेरी अरेस्ट हुई थी। जब मुझे पेश किया गया स्पेशल जज साहब के सामने तो मुझे जेसी की रिक्वेस्ट की, कोई ईडी कस्टडी ना मांगी, बिकॉज वन ऑफ माय पॉइंट सर वाज कि आपने प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज किया, आपने ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उसके बावजूद कभी भी मुझसे ना इंफॉर्मेशन मांगी गई ना मेरा स्टेटमेंट मांगा गया। जब मेरी अरेस्ट भी करी गई उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिया और आपने मुझे जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया। तो पहले दिन आपने जुडिशियल कस्टडी की मांग करी, वो आपको मिली। तब से लेके जब तक मेरी बेल एप्लीकेशन इस कोर्ट के सामने उसकी बहस नहीं हुई, तब तक आपको ये याद नहीं आया कि आपने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था। जब हमने ये बात यहां पर कोर्ट में कही, and your lordships asked the question of have you recorded the statement, my learned friend very fairly said yes, we have not recorded a statement. Then an application comes to be moved, say that we want custody. The learned special court gave them permission that whatever you wish to ask, go to the judicial and ask your questions, record whatever statement. So now a statement has also been recorded. It has been done now 4 days ago, 27th and 28th of October. 28th of October, I had addressed this court on 23rd. Application was filed on 26th. While declining ED remand, permission was granted to them to record my statement in judicial custody, and that was done on 27th and 28th. But what is most peculiar now is, and sir, this is what I will do is I will summarize my 10 points which I am troubling this court with. What your honor will recall, this is about import of poppy seeds, where import has been done under a license from a correct country for the correct quality and the correct quantity by the correct person, following customs laws and following the regulations of the narcotic commissioner. So there is no problem on the actual import or the actual commodity which has been taken. The case here was, if the lordship remembers, the allegation is one of benami. कि आप कर रहे हो यूनिक के नाम से, और कर रहे हो ठीक है, आपने 8 और लोगों को साथ में मिलाया, उनके नाम से 8 अलग कस्टम्स आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उन्होंने लिए और आपने उनकी मदद करी, जो ये दिखाता है कि एक्चुअली आप। So the 10 points are, the first point that I had made was, ये सारी चीज ईडी को फेमा की इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनकी धारणा बनी। तो पहला पॉइंट था कि ईडी इज नॉट द एजेंसी डिसाइड ऑन बेनामी, इट इज ए फुल एक्ट pertaining to benami. That act has a separate department under the Income Tax Act to decide कि कौन सी चीज बेनामी है और कौन सी नहीं है। ईडी वो एजेंसी नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, ईडी साहब को जब पता लगा या ऐसी धारणा उनकी हुई कि हाँ ये बेनामी हो सकता है, तो उन्होंने उस एजेंसी को चिट्ठी तक नहीं लिखी कि जी आप इसके अंदर तहकीकात कर लें, आप तफ्तीश कर लें, डिसाइड कर लें कि ये बेनामी है या नहीं है। तीसरी बात कि हमने स्ट्रेट अवे पुलिस में इंफॉर्मेशन भेज दी कि आप इस चीज के ऊपर एफआईआर दर्ज करें। वो पावर ईडी के पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नहीं है। I had shown section 66 of PMLA, section of Money Laundering Act, उसके अंदर पावर है, बट वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उस दिन, and so lack of power was the third. The fourth point, sir, मैं सब कुछ मान लिया, 9 लोग बेनामी हैं,
और 9 लोग ने सारी कस्टम्स ड्यूटी देने के बाद, सारी परमिशन के देने के बाद प्रॉपर तरीके से एक कमोडिटी को इंपोर्ट किया। तो इसमें 417, 420 चीटिंग कहां से आई, किसको लॉस हुआ? आपका एफआईआर कहता है गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस तो उतनी है तो होती, चाहे मैं इंपोर्ट करूं चाहे कोई और इंपोर्ट करे। गवर्नमेंट अलाउ करती है एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी का आना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और इंपोर्ट करता तो ज्यादा ला सकता था। सो 420 और 417 के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं, कोई इंड्यूसमेंट नहीं, एंड दैट इज व्हाई फॉर आफ्टर डिस्पाइट मोर देन अ ईयर, जो एजेंसी, जो पुलिस ऑफिसर उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आज तक उन्होंने कभी मुझे ना बुलाया, चार्जशीट फाइल नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। उस चीज को 1.5 साल हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जब 420 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को देख, दैट मीन्स आपने इस गलत काम करने से जो आपको इकोनॉमिक एडवांटेज, जो आपको फाइनेंशियल लाभ मिला, उसको पकड़ना ईडी का काम। जब 420 खुद ही फाउंडेशन उसका हिल रहा है भी या नहीं, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होने का तो सवाल ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई all of these points, sir, which I am making, go to the first larger point, which is section 45 PMLA, जो requirement है, that it shows that I am not guilty of this offense. This is a higher threshold has been met and I should be granted bail. This is the first large submission. इसके अंदर ये 6 sub points थे. The second large submission which I made, sir, was कि आपने अरेस्ट करते हुए आपका एक थ्रेशोल्ड है सेक्शन 19 में. सेक्शन 45 is the first bucket, सेक्शन 19 is the second bucket. कि अरेस्ट करते समय ईडी साहब के पास अपने मटेरियल पे एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए. क्या होना चाहिए? I am guilty of that offense. It is not an arrest under CRPC which can be made on suspicion, not on credible information, not on my finding out for an investigative purpose कि आपने ये किया या नहीं किया. ED की power to arrest under 19 is after ED comes to a conclusion, हाँ ये offense हुआ, हाँ इस आदमी ने किया, हाँ मेरे पास वो सारा मटेरियल है ये दिखाने के लिए कि गिल्टी है. और अगर गिल्टी है, the question that I had posed for myself, and I will invite this court to answer it in the context of this order and judgment, is can anybody come to the conclusion of somebody else's guilt without even speaking to them? कि मैंने अपने घर में फाइल के अंदर आपकी गिल्ट के बारे में सामान इकट्ठा किया, आपसे सवाल नहीं किया, आपसे जवाब नहीं पूछा, आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया और आपको गिल्टी तरकार कर दिया. दैट इज द फैलेसी अंडर सेक्शन 19. और अगर सेक्शन 19 का उल्लंघन है तो रिलीज द सेक्विटर. आई हैड शोन जजमेंट्स ऑन दैट. सो दिस इज द सेकंड बकेट. एंड द थर्ड बकेट, व्हिच इज द लास्ट बकेट व्हिच आई हैड नोटेड, is on the issue of necessity to arrest. क्या जरूरत थी? अब आप इस इन्वेस्टिगेशन को 11 महीने से आप कर रहे हैं, 1.5 साल से प्रेडिकेट एजेंसी कर रही है. किसी एजेंसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि वो मुझसे आके सवाल जवाब करे. आपने फेमा के अंदर मेरे अगेंस्ट एलओसी खोली ताकि मैं इंडिया छोड़ के ना जाऊं. मैंने उस एलओसी को चैलेंज किया. उस एलओसी के चैलेंज के अंदर आपने अपनी एलओसी को वापस लिया. 11 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना सोचे, मुझसे मेरे बारे में बिना जानकारी लिए आपने मुझे अरेस्ट कर दिया. नेसेसिटी क्या थी? और अगर नेसेसिटी नहीं थी
So from the law of Joginder Kumar onwards, which applies to normal CRPC cases, the arrest had to be wrong. And that this is where I had shown, sir, Arvind Kejriwal's judgment. Supreme Court में ये reference दिया गया 3 judges को अभी. And while that reference is pending, interim bail has been granted till the time that reference is decided. So my third submission in the alternative is 45 का threshold सर मैं क्रॉस करता हूं, इसलिए मुझे बेल मिलनी चाहिए. नंबर 2, सेक्शन 19 में इनकी अरेस्ट करने के अंदर इन्होंने मैंडेटरी प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे बेल मिलनी चाहिए. और नंबर 3, मेरी अरेस्ट की एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई नेसेसिटी नहीं थी, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. एंड सो योर ऑनर शुड necessity is over and above 90. Necessity, Arvind Kejriwal judgment, let me show that straight away again, says कि necessity के बारे में किसी statutory provision में नहीं है, लेकिन क्या हमें necessity additionally देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. अरविंद केजरीवाल की सर जजमेंट है, वो compilation आपके पास थी. उस compilation में पेज 163 पर that judgment begins, sir. And straight away, let me take your honor to the relevant issue. तो बिल्कुल इस जजमेंट के एंड में आफ्टर all of that I read, I am going straight away to the issue of necessity. Please come, sir. Page 204, paragraph 84. तो सेक्शन 45 का ग्राउंड अलग, सेक्शन 19 का ग्राउंड अलग. तीसरा इंडिपेंडेंट ग्राउंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, एंड दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद एट पैरा 84 and 85. In view of the aforesaid discussion, and as Vijay Madan Lal Chaudhary supra is a decision rendered by 3-judge bench, we deem it appropriate to refer the following questions of law for consideration by a larger bench. A, whether the need and necessity to arrest is a separate ground to challenge the order of arrest passed in terms of section 19(1) of the Act, whether the need and necessity to arrest refers to the satisfaction of formal parameters to arrest and take a person into custody, or it relates to other personal grounds and reasons regarding necessity to arrest a person in the facts. तो क्या आपका सिर्फ एक लिप सर्विस फॉर्मली मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे जरूरत थी, क्या वो सफिशिएंट है, या in the context of that person whether really there is a necessity is to be seen. That is point number B. And point number C, if questions A and B are answered in the affirmative, what are the parameters and facts that are to be taken into consideration by the court while examining the question of need and necessity of arrest? As we are referring the matter to a larger bench, we have to, please see the words, we have to, despite our findings on reason to believe, consider whether interim bail should be granted to Arvind Kejriwal. Given the fact that the right to life and liberty is sacrosanct, and Arvind Kejriwal has suffered incarceration of over 90 days, the questions referred to above require in-depth consideration by a larger bench. We direct that he should be released on interim bail in connection. Please. My submission, sir, is this. This is a case where it was 90 days custody. That custody is not significant from the point of view of PMLA. बाकी cases हुए सर जिसके अंदर 6 महीने हुए, 2 साल हुए, 1.5 साल हुआ. Those are cases where period of custody has weighed with the court purely to grant bail. And I had started by saying, I am not one of those cases, which is why I am saying, please test me on the level of 45. Please test them on their allegations of section 19.
Additionally, there is an issue of necessity. And that is why these are the three things that I am beseeching this court to consider. कि जब पूरे केस के अंदर आपके पास allegation wise material is questionable or does not exist, and where you exercise that power prematurely, take a man into custody before that material came in, violated section 19. According to me, Mullah, this is a case where I should be released on bail. I am putting this third point as an additional factor, not as the primary point. Not as the, so I am not seeking interim bail. I am seeking bail. Because according to me, I have reached the threshold of 45. पर इससे मैं ज्यादा क्या बोलूं कि अगर आप इनके काउंटर एफिडेविट को एक बार देखें, and it is so peculiar that a responsible agency, पर मैं पढ़ूंगा इसको, लेकिन एजेंसी कहती है आप फ्लाइट रिस्क है. क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं. आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप फ्लाइट रिस्क है. सर कार्गो अंदर आता है, इंपोर्ट होता है, मैं अपने काम के लिए बाहर जाता हूं. देयर कैन बी ऑलवेज कंडीशंस इम्पोज्ड इन दीस सिनेरियोज टू टाइट्रेट. एवरी डे वी डील विद सिचुएशंस वेयर पीपल आर have to travel for purpose of work or otherwise. Please see पेज नंबर 26. इनकी दो ऑब्जेक्शन है. पैरा H. The accused arrestee fails the triple test of bail for the following reasons: tampering with evidence and influencing witnesses. It is submitted that the arrestee accused person is the kingpin and mastermind of the whole scheme narrated above, where large number of Benami entities were formed with dummy proprietors who were his associates and employees. If he is let out on bail, there is high likelihood that accused arrestee will influence the witnesses in this case. Flight risk. It is submitted that the accused is a person of means and works in the business of import and export. Such circumstances are a flight risk if let out on bail. My submission was this: both of these issues are irrelevant as far as the others are concerned. Their statements have already been recorded. And what Your Honor will recall is all of those persons are co-accused. So there is no independent witnesses that they have which are capable of being influenced. And second is the work that somebody does. Only because a person is in import-export business does not make him a flight risk. But my submission is that on these aspects, I should be released on bail. Whatever conditions Your Lordship feels that I should comply with, I am ready and willing to do so. If Your Lordship has any questions, whether on facts or on law, I am here to assist the court in finding the truth, both legally and factually. Constructed that I have exceeded my eligible quota for import of poppy seeds from the Turkey. Then thereafter, in question number 15, during the search on 1/10/22, document related to CBI communication for the other 9 entities were found on the unique trader office computer, indicating your control over these entities. Please clarify. So he stated that document relating to GST returns, income tax returns, and import documents were kept in each entity office space. Only CBI communication documents were kept in the unique traders office for educating and guiding my employees during the import permit application process. So, despite that, the section 50 statement which has been taken by the other co-accused person, they say that so that a statement is in front of the Honorable Lordship that in this statement, Mr. Irfan Pasha, son of Rayusha, he stated that please provide the detail of your profession. Question number 2. Thereafter, please provide the detail of income tax return. Please statement. अपील का हो सर, एक 27 की और एक 28 की, सेम पर्सन.
मिस्टर इरफान पाशा। सर वो प्रीवियसली जब केस डायरी थी उसके साथ ही यस सर हमने रिकॉर्ड की उसमें इसमें किरण कुमार भी है। किरण स्टेटमेंट ऑफ किरण कुमार, इरफान पाशा, हमजद पाशा, लोकेश, नूर अहमद, अलीमुल्ला शरीफ, एस मूर्ति, भुट्टा स्वामी एंड शंकर राव। All the which person? Yes, sir. They all are the co-accused. So they are the co-accused in the FIR, not in the ECI. इसमें कौन है? Which person? सर इसमें तो सिर्फ केवल अभी नहीं क्योंकि चालान कोई पेश नहीं। नहीं चालान पेश नहीं किया इस केस में कोई कुछ पर्सन कोई नहीं। कोई भी नहीं। So they all are the co-accused in the FIR. On the basis of that FIR, we are registering the ECIR. And in ECIR, before arresting them, we are recording the statement of all of them. That case. सर ये कह रहे हैं आज इन्होंने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल नहीं करी है इसलिए कोई को अक्यूज नहीं है, अदरवाइज एवरी पर्सन इन दैट इज ऑटोमेटिकली को अक्यूज्ड। I'll answer that. Let my learned friend finish. सर मैं इन्वेस्टिगेशन तो रोक ही नहीं सकता हूं ना, रोका इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई मेरी अरेस्ट से पहले। That is the biggest fallacy which they are not answering. Please and let the learned prosecutor indicate कि गिल्ट इन्होंने सेक्शन 19 के अंदर आ गए उससे पहले मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया या नहीं किया। आप 27 और 28 अक्टूबर 2024 का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं साहब को, मेरी अरेस्ट 3 अक्टूबर को हो गई, आपने अपना गिल्ट का मतलब बना लिया। Can they come to a conclusion about my guilt without recording my statement? FIR हो गई, उससे इनको ये संतुष्टि हो गई कि मैं PMLA में गिल्टी हो गया। FIR हुई, आई विल शो कि को-अक्यूज के भी एडमिसिबल नहीं है, ये जो दिखा रहे हैं आज ये भी एडमिसिबल नहीं है कि ये मेरी कस्टडी के बाद के स्टेटमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कांट इवन रीड देम। सबने कहा कि हमारा सारा कंट्रोल आसिफ हनीफ थारा का ही था, हम नेम से सारा बिजनेस इंपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना, एवरीथिंग वाज डन बाय आसिफ हनीफ थारा। था नॉ स्टेटमेंट है सेक्शन 50 That is submitted. विद एज गुड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग एट पार विद Yes, eligible. that is one material, and bank account statement which shows the money trail, how the money flows from unique trader to these entities, and then payment was run to the foreign supplier. इसमें शो कर रहा है कि इन्होंने लिखा है, जब Sir, रिकॉर्ड किया है। I'm most obliged. मेरा सवाल सर बड़ा लिमिटेड है। Any agency which has to come to a conclusion of my guilt, not a guilt of 9 persons. Any agency which has to come to a conclusion regarding my guilt and they cause themselves judicial proceedings, can they come to that conclusion without speaking to me? तो आइयो साहब कहते हैं बिल्कुल सही सर, 19 के अंदर इनको ये कंक्लूजन करना है कि मैं गिल्टी हूं, आसिफ हनीफ थारा गिल्टी है, उसके लिए इन्होंने 9 लोगों के स्टेटमेंट आप
I will demonstrate that and I will also demonstrate the fact कि वो admissible नहीं है, but आप उसको 1 मिनट साइड रख लें। इन्होंने 9 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए। पलड़े में जो लेडी जस्टिस थी उसके लेफ्ट पलड़े में 9 लोग के स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन्होंने लेफ्ट साइड पे रखा। गिल्ट का मेरी इन्वॉल्वमेंट इनको दिखाई दी, मेरी पॉसिबिलिटी सस्पिशन मेरे अगेंस्ट इनको दिखाई दिया। एक आदमी का कहना कि मैं गिल्टी हूं, यहां तक पहुंचने के लिए पलड़े का राइट साइड तो खाली रखा। क्यों खाली रखा साहब? आपने इतनी भी जहमत नहीं करी कि आप मुझ तक आके मुझसे पूछे, मुझे बुला ले, वो चीज आप। एंड अगर वो नहीं किया साहब, अगर वो नहीं किया तो आपने सेक्शन 19 का उल्लंघन किया, बिकॉज यू कुड नॉट हैव कम। आई एम मोस्ट ऑब्लाइज। दिस इज वेयर आई प्लीज सर, सेक्शन 19 में, एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन हैड अरिजन कि व्हाट इज द मटेरियल ऑन विच सेक्शन 19 हैज टू बी सीन। सर मैं इसमें 2 चीजें आपको दिखाऊंगा। नहीं, but material has to be admissible material. That is what I had read. Please first see. Let me start by showing Prem Prakash. आपकी compilation पे page 246 पे आए सर। Basis of material has to be admissible even at the stage of bail. The moment, let me put it another way. आईओ साहब आज लिख के दे सकते हैं कि वो अक्यूज, ये जो 9 लोग हैं जो एफआईआर में अक्यूज्ड है, as doing what? बेनामी है और एक बेनिफिशियल ओनर। जो आदमी बेनामी है, जिसने साइन किया, जिसने पैसे लाया, आप कह रहे हैं कि जिसने उस पैसे को मुझे दिया भी नहीं। अपना स्टेटमेंट इन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग मेरे साथ नहीं करी, पैसे जो उन्होंने कमाए वो मुझे नहीं दिए। का कहना है कि जो पॉपी सीड्स आए आपने आगे मुझे बेच दी। सीड्स ऑफ क्राइम के अंदर नो एजेंसी। I am most obliged. Even at the point of arrest, आप let me put it this way sir, ECIR दिखा दे और ये बोल दे कि ECIR में उनका नाम अक्यूज नहीं। दिखाइए ECIR, साहब को दिखाइए। सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास है। मुझे आप ECIR का फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। भाई के साथ ECIR मुझे तो नहीं दिखाई दिया। Right? You see the first page. And correct. मेरा नाम और उन 9 लोगों का नाम एक ही बार एक बक्से के अंदर वन आफ्टर द अदर लिखे। But this, in my humble submission, has to be taken off very serious note. Today it suits an agency to say कि मैं वो co-accused नहीं है। एक टेबल है नीचे, लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स, उस टेबल में सबसे ऊपर नाम मेरा है और उसके आगे जो 9 नाम है वो उनके हैं जिन्होंने इनके स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किए। और फिर आज आपसे आके कहा जा रहा है कि सर ये तो शुरुआत, ECIR is the beginning of their investigation. These persons were named suspects in that. Obviously they are not accused because they are not, there is no prosecution complaint filed. But it is absolutely dishonest to say that they are only witnesses and hence their statements become admissible. तो एक मेरे पिताजी साहब है, मेरे पिताजी साहब, और ये वो लोग हैं जिन एक कंपोजिट केस है जो एफआईआर। सर एंड आई आस्क माय सेल्फ, एफआईआर किसके कहने पे फाइल हुई?
एफआईआर वाली एजेंसी को अपने आप तो नहीं पता लगा था कि ये बेनामी है। इन्हीं साहब ने चिट्ठी लिखी थी, ये 10 लोग अक्यूज हैं। नहीं सर, ये तो थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप था ईडी ने फेमा के अंदर चिट्ठी लिखी, इसी व्यक्ति ने, यही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसके अंदर कहा कि ये लोग सस्पेक्ट हैं, उसके बेसिस के ऊपर एफआईआर हुई। उस एफआईआर पे जो आप देख रहे हैं ईसीआईआर, ये हुई। घूम फिर के ये लोग सस्पेक्ट फ्रॉम डे वन। So today to be told that these 9 persons are not accused, nothing short, sir, of misleading the court. It is my humble submission. I am sorry to say.